हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भलो थिबे। देखंतु आज आमे माने कोन करबा इंडियन नेशनल मूवमेंट 1932 1947 रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जाकि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसबो। आपण माने जति चाहछन्ते एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबाकू डेफिनेटली ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये कर परिबे। ठीक अछि, चलंतु आज प्रथम क्वेश्चन देखिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु हमरो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 वेयर द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। हम देखो किए प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग लाहौर सेशन आम जो पूर्ण स्वराज को पास कराइला। देखो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। देखो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आमर ड्यूरिंग पूर्ण स्वराज आमर जवाहरलाल नेहरू आमर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आमर द दांडी मार्च वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस। आमर दांडी मार्च क्यों स्थान रे यह स्टार्टेड बा आरंभ होइतिला। ए अहमदाबाद, बी साबरमती आश्रम, सी बॉम्बे, डी बारदोली। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम रु आमर सल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च स्टार्टेड बा आरंभ होइतिला आमर 19 मार्च 1930 एंड एंडेड एट दांडी गुजरात ऑन 6th April 1930। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आमर आरंभ होइतिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was attended by महात्मा गांधी। हमरो महात्मा गांधी क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे से जोग देथिले। ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डी नन ऑफ द अबव। देखंतु यार सठिक आंसर है हमरो ऑप्शन नंबर बी मन रखिबे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे हमरो महात्मा गांधी अटेंडेड करथिले। हमरे या 1931 लंदन ने होइतिला एज ए सोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमरो भारतीय नेशनल कांग्रेस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधि भाव में से जोग देते एंड आफ्टर सिंगिंग द गांधीयन साइनिंग द गांधीयन इरविन पैक्ट, गांधीयन इरविन पैक्ट को साइन कराइथिला। एंड हाउएवर द कॉन्फ्रेंस फेल्ड as British leaders refused to discuss the complete independence। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखंतु द क्वाइट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमर जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कराइथिला का रेस्पॉन्स द्वारा एंड क्यों इवेंट रे। ए अगस्त ऑफर, बी क्रिप्स मिशन फेल्यूर, सी साइमन कमिशन, डी कैबिनेट मिशन। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी मन रखते क्रिप्स मिशन फेल्यूर जो हमर डोमिनियन स्टेटस हमर क्रिप्स मिशन मार्च 1942 proposed dominion status for India and which was rejected by Congress, and this led to the launch of the Quiet India movement on 8th August 1942 and under Gandhi's leadership with the slogan do or die। हमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट किए स्टार्ट करते मूवमेंट को महात्मा गांधी स्लोगान थिला डू और डाई 1942 एंड 8th August मन रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नावल इवेंट प्लेड ए क्रुशियल रोल इन वीकेनिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 1946। व्हिच नावल इवेंट प्लेड ए क्रुशियल रोल वीकेनिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 1946। हमर देखंतु क्यों इवेंट बा क्यों कार्य मुख्यतः भूमिका ग्रहण करथिला जेतेबेले हमरो ब्रिटिश इंडिया रूल को किपरि भाबरे भारत रे दुर्बल करिबारे। देखंतु ए बॉम्बे म्यूटिनी, बी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, सी आईएनए ट्रायल्स, डी तेभाग मूवमेंट। यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर बी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी फेब्रुअरी 1946 स्टार्टेड इन बॉम्बे। देखंतु यह बॉम्बे रे आरंभ होइतिला एंड स्प्रेड टू अदर नावल बेसेस। It reflected the growing discontent among Indian armed forces by and played a role in the British decision to leave India। Next question देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was the first viceroy of the British India। A Lord Dalhousie, B Lord Canning, C Lord Lytton, D Lord Curzon। यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर हमर बी हेउची करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग हेउचंती हमर से हेउचंती हमर वाइसरॉय ऑफ द प्रथम वाइसरॉय थे भारत। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed abolishing the East India Company rule and transferring the power to the British Crown। Lord Canning became the first viceroy of India during the amro गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जेतले पास करला से समय हमर प्रथम भारत गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड डेलहौसी, डी लॉर्ड रिपन। देखंतु हमर यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डेलहौसी जे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बा लैप्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करथिले बाय लॉर्ड डेलहौसी 1848 and 1856 which stated that if an Indian ruler died without a male heir
his kingdom would be annexed by the British। जदि भारतर जो राजा थिले भारतर कौन पाखे यदि वंशधर बा न रही ठीक अच्छे ता बदल में से वंश से जो सिंहासन बा से राज्य को ब्रिटिश अधीन में गोटे ल थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह पॉलिसी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वाइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हैडिंग, डी लॉर्ड लिनलिथगो। हमर जो व्हिच वाइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905 हमर जो बंगाल विभाजन हैला से समय हमर किए वाइसरॉय थिले देखंतु यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। Partition of Bengal 1905 was carried out by Lord Curzon to divide Hindu and Muslim populations. This led to widespread protest and the Swadeshi movement. The partition was annulled in 1911. Next question देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हमर who was the first last British governor of India? देखंतु हमर भारतर ब्रिटिश कर ठीक अछि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले? ए लॉर्ड ओवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी लॉर्ड लिनलिथगो। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन जे कि हमर ब्रिटिश रो लास्ट गवर्नर जनरल थिले भारत रे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हमर हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड ओवेल, डी क्लेमेंट एटली। देखंतु हमर जो 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कराइतला से समय रे हमर भारत रो वाइसरॉय थिले क्लेमेंट एटली। यार ऑप्शन नंबर डी हेउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस्ड व्हाट मेजर रिफॉर्म्स? हमर जो इंडियन काउंसिल एक्ट अछि ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस्ड व्हाट मेजर रिफॉर्म्स? ए डायरेक्ट इन provinces, बी expansion of legislative councils, सी provincial autonomy, डी separate electorate। देखंतु यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी expansion of legislative council। The Indian Council Act of 1892 expanded the legislative councils. They introduced indirect election allowing local bodies to recommend members। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस? क्यों व्हाट इंट्रोड्यूस्ड कराइतला डायरकी इन द प्रोविंसेस? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो डायरकी जो प्रोविंसेस रे ये इंट्रोड्यूस कराइतला अंडर द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। डायरकी डिवाइडिंग सब्जेक्ट इनटू रिजर्व्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर। हमर जो रिजर्व्ड सब सब्जेक्ट रहला सेगुडी को का द्वारा कंट्रोल करा जिबा हमर गवर्नर को द्वारा एंड ट्रांसफर्ड जते सब सब्जेक्ट रहला से सब कंट्रोल बाय द इंडियन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची which act provided for the establishment of federal court of India? क्यों act provided for the establishment of the federal court of India? A government of India act 1919, B government of India act 1935, C government of India act 1947, D constitution of India 1950। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for federal court which stated functioning in 1937. This later evolved into the Supreme Court of India। Next question देखिबा। Next question हेउची who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? A B R Ambedkar, B Rajendra Prasad, C Sardar Patel, D जवाहरलाल नेहरू। देखंतु हमर जो सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर आंबेडकर। देखंतु हमर चेयरमैन हेउचन हमर ड्राफ्टिंग कमिटी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हमर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस? जेतबेले हमर भारत स्वाधीनता पाइला से समय ब्रिटेन किए प्राइम मिनिस्टर थिले? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी हारोल्ड मैकमिलन, डी रैमसे मैकडोनाल्ड। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली the British Prime Minister 1945 to 1951 played a crucial role in granting independence to India. His government passed by the Indian Independence Act of 1947 which led to the creation of the India under Pakistan। Next question देखिबा। Next question हेउची who led the Indian National Army INA after the death of the Ras Bihari Bose? Who led the Indian National Army after the death of the Ras Bihari Bose? Who led कि नेतृत्व नहीं इंडियन नेशनल आर्मी आफ्टर द डेथ ऑफ द रास बिहारी बोस? ए भगवत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मनमोहन सिंह। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA in 1943 and gave the famous slogan give me blood and I will give you freedom, and he also formed the provincial government for free India in Singapore।
ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द क्रिप्स मिशन 1942 वाज सेंट बाय ब्रिटेन टू इंडिया ड्यूरिंग व्हिच ग्लोबल इवेंट क्रिप्स मिशन को 1942 रे पठा जायतिला ब्रिटेन टू इंडिया एंड क्यों समय रे से ग्लोबल इवेंट कोन थिला ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बी सेकंड वर्ल्ड वॉर सी कोल्ड वॉर डी रशियन रेवोल्यूशन यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी सेकंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 to secure Indian cooperation in the war effort. However, it's after the Dominion status after the war was rejected by the Indian leaders, leading to the Quiet India movement. Next question देखिबा next question हेउची the cabinet mission plan 1946 recommended which of the following: A partition of India, B dominion status for India, A federal structure of the three groups of provinces, D immediate independence for India. Cabinet mission plan 1946 recommended which of the following? यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस फेडरल स्ट्रक्चर विथ थ्री ग्रुप ऑफ द प्रोविंसेस प्रथम हेउची कैबिनेट मिशन प्लान हमर प्रपोज्ड होइतला 1946 या थिला फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइडिंग इंडिया इनटू थ्री ग्रुप्स provinces. However, disagreement between the Congress and Muslim League led to the plan's failure and eventually the partition of India. ये जो हमर फेडरल स्ट्रक्चर थ्री ग्रुप विथ प्रोविंसेस को प्रपोज कराइतला हमर ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन प्लान बट कोन हला ना ए जो प्लान टाकू अपोज कराइतला ड्यू टू अपोज सेति पे हमर भारत डिवाइड हैला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच ब्रिटिश एक्ट abolished the system of diarchy and introduced provincial autonomy which british act abolished the system of diarchy and introduced provincial autonomy A government of India act 1919 B government of India act 1935 C Indian independence act 1947 D charter act of 1833 देखंतु एरा सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर हमर बी हेउची करेक्ट काहेकि ना Government of India Act 1935 abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy, allowing Indians to form government in provinces. This led to the 1937 provincial elections where the Congress won in several provinces. Next question देखिबा next question हेउची what was the main feature of the Indian Independence Act 1947? A established India as a republic. B granted complete independence to India and Pakistan. C introduced separate electorate. D provided for a unitary system of government. What was the main feature of the Indian Independence Act 1947? Here सटीक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी granted complete independence to India and Pakistan. Granted complete independence to India and Pakistan. Indian Independence Act 1947 passed by the British Parliament led to the creation of two independent nations, India and Pakistan, 1947 August. It also abolished British rule in India and empowered the Indian Constituent Assembly to draft a new constitution. ठीक अछि ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख रे हम भारत स्वाधीनता होइतिला ता सहित पाकिस्तान मध्य सेपरेट होइतिला भारत ठारू ठीक अछि या थिला किछि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपन मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीतिबो ता सहित आपन मानकर रिवीजन मध्य हेल्प आसीतिबो आपन माने यदि चाहउछंती एपरि भाबरे डेली क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिबो तले डेफिनेटली आपन माने ए चैनल ऊपर फॉलो करू